मेरे को मैसेज करा उन्होंने, वे थैंक यू फॉर द इंटरेक्टिव क्लास। पहले इंटरेक्टिव क्लास, हाँ इंटरेक्टिव क्लास, लेकिन क्लास में थी तो क्या क्या कहा था इंटरेक्टिव क्लास को, इंटेलेक्चुअल क्लास। तो बाद में मैंने बताया था, तो उन्होंने थैंक यू लिखा, तो थैंक यू के साथ साथ ये बता दी, बट आई विल नॉट बी एबल टू डू इट्स अ लॉन्ग क्लास इन 90 minutes. I think a lot of people have a lot of complications in their mind about learning. Nah, they think in many different ways. Hey Ravi, Tani, Good evening, sir. Good evening, sir. evening. Sorry, sir. I was leave in a middle because my Wi-Fi is Wi-Fi network was not work well. I was leave मतलब मैं लीव कर गया था मिडल से. I was leave. Left. I was leave in the class in the middle. एक सेकंड, व्हाट इज द I पास्ट left the टेंस? tab. पास्ट टेंस कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है रवि? रवि पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है? अब सन्नाटा लगा देगा ये Second second form. ऑनेस्टी से पढ़ाई नहीं करना तेरे को, तो खेलना है तो फिर ऐसे ही होगा, सीधा सीधा बोलना नहीं याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। तो सेकंड फॉर्म रख ले भाई, अभी तो सही कर ले, हेलो यास्मीन मैम, यस अब बोलो भाई कैसे बोला रवि? I live in the middle. फिर से ट्राई करो। क्विक, सन्नाटा मत लगाओ। डिसऑनेस्टी करनी है, बात करनी है, सीखना है। आप ही करेक्ट कर दीजिए सर. तो फिर आप ये सन्नाटा क्यों लगाए थे? हाँ बताएं रवि, सन्नाटा क्यों लगाया था आपने? सन्नाटा लगाने की वजह बताइए। नथिंग सर. नथिंग कैसे है? ये बातचीत में मैं सन्नाटा लगा लूं, आप कुछ पूछो मैं चुप हो जाऊं? हाँ बताओ। क्या करना चाहिए ऐसा ना, अपने प्रॉब्लम को सामने रखना चाहिए कि भाई ऐसा दिक्कत है, ठीक है। तो V2 होता है, तो V2 लीव I का left V2 the क्या पढ़ा tab. है तुमने? Live. लेफ्ट। I left the tab. My network wasn't okay. लेफ्ट इज द V2। अब सही बोले, अब सेंटेंस को सही करिए। I left in the middle. राइट। अब इसको दिमाग में दोहराइए, 4-5 सेंटेंस बनाइए बैठे बैठे, वहीं चलते चलते रास्ते में, एंड यू विल बी फाइन। Good evening, sir. हे, Excuse me, sir. यस मनीषा। Sir, will it be helpful for me to read all the NCRT book from first to 10th इन फ्रॉम विच परस्पेक्टिव? uh, to improve my English? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू। Sir, I have finished class 1 book. Means it is not a big deal for others, but it is for me 105 question only there are in class first book NCRT. So I have finished all of them and I am practicing it so that I can teach the means students well. गुड। I I read all book means 2-3 times and I have answered all the question 2-3 times on my own. दैट्स लवली। 1.3 Connor and Karen McGrady, retired teachers, empty nesters, and global. So was there any homework, guys? Yes, there was the text.
Okay, simply the best. My favorite things. Yesterday we learned the use of what somebody like, what something like, and now we are going to carry on with this audio file 7.1. Let's listen. And I hope your audio script is ready. So check your audio script, everybody. Either you have written it correctly or you made some big blunders. Mistakes are always welcome. They will give you a chance to learn. But I hope you guys are big blunders. What are big blunders? Those silly mistakes that you call, like you should know them for sure that this is how they should be, and still you get them wrong. You do not use them the right way. So those are the mistakes I will be more worried about. Otherwise, I'm fine with you making mistakes and learning from them. 7.1. Let's see. My favorite things. Hello, and welcome to My Favorite Things. Today I'm talking to the German photographer, Matt Henneck. Welcome, Matt. Hi. So let's start with your favorite actor. So when we write let's, Arish, there is an apostrophe between T and S. So there is an apostrophe after T. Let's. We don't write LETS. I hope everybody knows that. Everyone, do you know that? That let's is written with an apostrophe S, which Yes, means sir. let us. Let's means let us. Let us. So apostrophe indicates that a letter is missing. A letter is hidden. What is the purpose of apostrophe? Apostrophe tells you that a letter is missing. Sometimes two letters are missing. And apostrophe also suggests possession in some cases. Right, everyone? So, where is it? Go and change. Okay, let's continue. You've chosen Daniel Day-Lewis. So, okay, let's start with your favorite actor. You've chosen Daniel Day-Lewis. Why do you like him so much? He's such a brilliant actor. I just love him in all his films. He's so talented, but he only does what he wants to do. He only does what he wants to do. He only does what he wants to do and believes in. Let's understand this part. He only does what he wants to do is easy, isn't it? He only does what he wants to do. Okay. And the next line is, next phrase is and believes in. How do you connect it? How do you connect it? Good evening. Good evening, everyone. Sorry. Yeah, I got a little distracted. What was I talking about? He only does what he wants to do and believes in. Okay. He does what he believes in doing. He does what he believes in doing. Okay. Okay, I think I'll respond to her later. We'll just carry on with our lesson.
Ravi. Yes. He only does what he wants to do and believes in. Okay, he believes in those things, then he does them. Okay, otherwise he doesn't. He only does what he believes in. Forget about this part. He only does what he believes in, which I think is great. Okay. And believes in, which I think is great. Which I think is great. Hey, Zafri, that's why you were on the bus yesterday. Okay, good to have you in the physical class. Come sit in front of me. Yeah, little at an angle. Yeah, that's better. That's better. So, have you put on any weight? Yeah. Been working hard there all day at the shop. So, अरे यार जवाब दे देते हैं. So, which I think is great. क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात कि वो वही करते जो करना चाहते हैं और जिस चीज में उनको यकीन होता है. For example, Amir Khan, he doesn't take any film that people offer him. He only does what he wants to do and what he believes in. You know, this guy makes one film in 2 years, 3 years. Okay, does it? He's such a big actor. Lots of people want him in his films, in their films, but he doesn't do them. He only does what he wants to do and what he believes in. Okay, yeah. All right. Shall we continue? Yeah. Yes, he certainly deserves his 3 Oscars. He certainly deserves his 3 Oscars. How many Oscars, Oscar awards has he won already? He has won 3, okay? 3. Yeah, he certainly deserves his 3 Oscars. Everybody knows the word deserve. We learned this as a young teenager, no? You deserve it. You deserve it, okay? So when somebody deserves something, they are good enough or bad enough to have it, right? Both ways. Something bad happens with you, then you say you deserved it. Yeah, like that. Somebody is insulting you, okay? Somebody who you respect, who you are nice to, and that person is insulting you. Then you can say, ऐसा क्या किए हम कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा पेश आ रहे हैं? What have I done to deserve this? What have I done to deserve this? Ravi, you cannot be off camera, Ravi. Sanjeev, you cannot be off camera. Arish, please understand that you guys are supposed to be on camera. I know you are what are you when the teacher? I didn't get it. आज फायदा ही होगा तेरा. So, deserves. He certainly deserves his 3 Oscars. He certainly deserves his 3 Oscars. He certainly deserves his 3 Oscars. Let's continue. And what about the world of sport? And what about the world of sports? What about the world of sports? Well, I'm a football fan. Well, I'm a football fan. And Bayern Munich is my team. I'm crazy about them. okay. I always find them exciting to watch. I always find them exciting to watch. This is a good one. I always find them exciting to watch. Find somebody exciting. I find them exciting to watch. And for me, they're simply the best, even when they aren't. For me, they are simply the best. They are simply the best. They are simply the best.
I don't know why she's asking this. She knows me. She has talked to me before. I think she just thinks she's with somebody else right now. Maybe. I don't know. Because my photo might not be there on Telegram. Is there? You're a real fan. You are a real fan. Why did she say you're a real fan? Because, okay, so whoever has written this, Arish, make the correction. I don't want the mistake here. Yes, sir. Make the correction. For me, they are simply the best, even when they aren't. For me, they're simply the best, comma, even when they aren't the best. They aren't the best. Okay, they understand this. That's a very interesting sentence, actually. Everybody. For me, they are simply the best, even when they aren't the best. It means, जब अच्छा नहीं भी सबसे अच्छा नहीं भी खेल रहे होते हैं, उस समय भी मेरे लिए वो सबसे अच्छे होते हैं. For me, they are simply the best, even when they aren't. They aren't the best. They aren't the best. यहाँ बोलने का मतलब जब अच्छा नहीं भी खेल रहे होते हैं, तब पर भी मेरे लिए वो सबसे अच्छे होते हैं. Come join then. Even when they aren't. Next. Now, your choice. So you are a real fan. Why this comment? Understand? A good fan, a real fan, doesn't only support his team when their team is winning. All right. They also support their team when their team is losing. They are a real fan. So you are a real fan. Music is interesting. Now, your choice in music is interesting. Yes, Bach. I think his music is very special, unique, in fact, and it's never ever boring. And of course, my favorite musician is my partner, the pianist And my favorite musician is my partner, the pianist Hélène Grimaud. She's the coolest. She's the coolest, superlative degree. She's the coolest. You're always in the best hands when she's playing for you. You're always in that's the lovely. best hands. You're always in the best hands. You're always in the best hands. Change tense into hands, okay? You're always in the best hands when she's playing for you. It's an idiomatic expression. You are in the best hands. So you are in the best hands means the person you are dealing with is the right person, okay? Perhaps the best person for that job, okay? So suppose, you want to say something nice about a teacher. You can say, when you're learning English with Vinay sir, you know you are in the best hands. When you're learning English with Vinay sir, you know that you are in the best hands, okay? It means this is a nice idiomatic expression, okay? It means that person is good for that job, okay? You're always in the best hands when she's playing for you. It means she's a good pianist. You will not be bored. She's really nice, right? Yeah. In the best hands. When the Ravi Shastri was team coach. Yeah, the team was in the best hands. The team was in the best hands. Exactly. Oh, that's lovely. Okay, now to food. Now to food. Now to food. From this to food. So movement. Topic movement. Now to food. Well, I really like simple country food. Now I simply like, or I really like simple country food. Okay. And I'm German, so my favorite meal is probably Nuremberg sausages and sauerkraut. Nuremberg sausage. These are proper nouns, guys. These are proper nouns, names of dishes. Names are a noun. Nuremberg sausages and sauerkraut, whatever. I don't care. Oh, the spelling, whether they're written correctly or not correctly. I think Nuremberg is definitely not correctly written, but who cares? Okay. I want to tell you, don't translate names into English because names are names, okay? Names are dishes. Khichdi is khichdi. Jalebi is jalebi, yeah. Don't look for those, videos where they are telling you the names of these things in English. Okay.
So I remember when I was a kid and my teacher taught me hodgepodge. Khichdi means hodgepodge. And we loved saying, oh, today I ate hodgepodge. जैसे पढ़ाने वाले से हम लोग पढ़ने वाले. Today I had hodgepodge. Hodgepodge is a situation. Hodgepodge is exactly a situation where not, everything is in chaos, nothing is clear. Okay, things are mixed up. It's a hodgepodge. I've never heard of those. Nordenbox sausages. I've never heard of those. What are they like? Notice. What are they like? Because she has never heard of them. That's why she said, what are they like? So when you don't know something and you want somebody to tell you, you use this structure to be plus like, subject plus like. Okay, what are those things like? What is that thing like? They're quite small, a little bit spicy, and so delicious. Okay, got it. He gave a general opinion. He gave an idea what they are like. They are quite small, a little bit spicy, and so delicious. Now. I must try them. And your favorite book? जब उसने कहा must try them, उसको किसी ने कहा कि तुमको जबरदस्ती करना पड़ेगा? किसी ने प्रेशर डाला? उसने कहा I must. Did she say I have to try them? I must try them. So when you decide to do something, then you don't say I have to. You say I must do it. बाल लंबा हो गया, कटवा लेना पड़ेगा. I must have a haircut. I must have a पेट निकल गया है, दौड़ने जाना होगा. I must go jogging in the morning. So when you don't have the pressure from outside, you are deciding. Can you see this very clearly? I must try them. मतलब अपने से बोले ना कि हाँ try करेंगे. कोई pressure है उस पे? So when you do not have any obligation to do something, but you decide to when you use must to say that you will do it. Okay, I must have a haircut. I must start jogging. Okay, I must work harder. Everybody is getting better. I'm not getting so much better. Okay, Ravi, if I listen to you, you got to listen to me. Otherwise, I'm sorry. It's not one-way traffic. It cannot work your way only. Ravi, I decided that I would talk to you later, but now that you have decided to turn your camera off again, so I have to ask you, is it going to be your way all the time? Okay, let's continue. I'm a great fan of the American writer Cormac McCarthy, and I've chosen his book. Where were we? I've never heard of those. What are they like? Are they, and your favorite book? I'm a great fan of the American writer Cormac McCarthy, and I've chosen his Border Trilogy. Okay. Border Trilogy. I've never read his writing. I've never read his writing. What's it like? What's it like? So every time she asks this question, read the line before. I have never read his writing. I've never heard of those. What does this indicate? When you don't know about something, then you ask this question. And here we are talking about the writing. What's it like? What's it like? It's amazing. It's almost like poetry. Oh. His books are sad in some ways, but always full of hope. But always full of hope. Well, I'll put him on my reading list. Well, I'll put him on my reading list. So, finally, your favorite TV program. Finally, your TV program. Oh, I thought The Americans was fantastic. It's a series about Russian spies living in America in the 1980s. It's quite shocking. Bhai Saab, why did you put this full stop here? It's a series about Russian spies living in America. Okay? So there should be only comma. Okay? Living in America in the 1980s. It's quite shocking sometimes. Sometimes, but it can also be very funny. So, time to practice the conversations with a partner, people. I'm opening the rooms for you. Breakout rooms, go there and practice. Practice the conversation. Go ahead, people. Accept the invitation.
Kalpana, you're stuck here. Are you going? Kalpana. The points. Hello, sir. Hey, Arish, you got I was dropped. in I was in Yasmin ma'am's group. Can you I have, please pick me I there? have ended the breakout session, and Oh, thank you. everybody is here now. Well, I have, Fortunately, I was done before I got dropped. unfortunately, Unfortunately. is it fortunately I got dropped? It means she was troubling you so much, huh? Yasmin ma'am was troubling you so much that you fortunately got dropped. Okay. Sir, voice is not clear properly that time. Voice. Yeah. Okay, everybody. I'm You sorry, guys, ma'am, due to my poor network. I have Wow, to, maybe you. I have to tell you something. You guys, when you're reading, you're just reading the words, or you know what you're reading. Do you know what you're saying in Hindi when you're reading it, reading those lines? That's the question. Uh, I Which know words? what I was reading, I know. but Oh, what I was saying. I was saying Uh-huh. in Hindi. Okay. Yes, Okay. Hindi is in my mind Okay. that Great. time. That's important. That's important to know what you're saying. Mm. Okay. If you're just reading those words, mouthing No, those, no, sir. it's not going to help. Mm. So, how many people have questions about any particular part of the conversation? That, hey, I didn't understand this very well. Please help. I'm ready here, sitting, waiting for your questions. Manisha, which अगर आप नहीं पूछा और मैंने पूछा तो क्लास से बाहर करने वाला हूं पक्का फाइन के साथ अंदर लूंगा फिर आपको आप पूछो मेरे से अदरवाइज yes, मैं पूछूंगा I will say. ठीक है दोस्तों आपके पास फुल फ्रीडम है ऑफ कोर्स आपने पढ़ लिया ना यू प्रैक्टिस द कॉन्वर्सेशन तो टेल Yes, मी sir. पार्ट्स यू डिडंट अंडरस्टैंड जो हिस्से आपको समझ नहीं आए थे Yes, sir. एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर वर्ड ट्रांसलेशन वो आइडिया जो वो एक्सप्रेस किया इंग्लिश में वो आइडिया आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा हिंदी में Okay, sir. So ask me if you have any questions, confusions, or need to Sir, fix. generally means you are the means coolest. So this line, generally we don't speak in English कि तुम बड़े means I don't think it is spoken by us in Hindi. You are the coolest, like this. Yes, मतलब he is the. तो हम लोग कुछ नहीं बोलते वहां पे उसका वो एक्सप्रेस नहीं करते कोई आइडिया नहीं है वो कोई आइडिया नहीं है उसने जो कुछ बोला कुछ बात नहीं है है सर लेकिन उस हिंदी में बात को ज्यादा. उस बात को हम लोग नहीं बोलना चाहते वो बात हम लोग नहीं बोलते जो वो बोल रहे हैं वो जो आइडिया हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो आइडिया पॉजिटिव आइडिया नेगेटिव आइडिया है सर पॉजिटिव आइडिया क्या है ये. हम नहीं एक्सप्रेस करेंगे उस आइडिया को क्या कहना चाह रही हो आप क्या हम लोग नहीं बोलेंगे वो बात क्यों नहीं बोलेंगे मनीषा व्हाट्स द पॉइंट अपनी पॉइंट क्लियर करो जो बोल रही थी उसी पे आगे बढ़ना चुप मत हो जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोग एक जगह पर ऐसा पहुंचाता हूं मैं आपको जहां पर आपको सोचने का मौका मिले तो आप लोग सरेंडर मार देते हो चुप हो जाते हो वहां जब मैं आपको लेके आया वहां तो आपको क्या चाहता हूं मैं आपसे इतने इस तरह से बातचीत करने का मकसद क्या है आपके उस दरवाजे को खुलवाना दिमाग के जिसको आपने आज तक नहीं खोला आप क्या कह रही हैं कि हमको उसको नहीं हम नहीं बोलते हम वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोलते होंगे वो आइडिया एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं ये पूछना है मुझे मैंने पहले ही कहा था वी डोंट वांट ए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन वी वांट सर, दैट आइडिया टू बी एक्सप्रेस्ड ओके हम लोग हाँ अलग तरीके से बोलते हैं. कैसे बोलते हैं जैसे वो बोला कि इसका फेवरेट म्यूजिशियन जो है उसका पार्टनर ही है और फिर उसने उसके बारे में अच्छा बोला कि हाँ वो तो बहुत ही कूल है चाहे जो भी बोला इसने तो
शी इज द कूलेस्ट, वो तो सबसे मतलब अच्छा है, ऐसा बोलना चाह रहा है। बट हम लोग का हिंदी इतना अच्छा नहीं है कि हम लोग इतना अच्छा बोलते हैं। अरे यार, फिर वही जा रही है तुम। हम लोग जैसे भी एक्सप्रेस करते हो वो मुझे एक्सप्रेस करो अपनी मदर टंग में। ये मैंने नहीं कहा अच्छा बोलना है तुम्हें, मैंने कभी अच्छा वर्ड यूज किया दोस्तों? मैंने कहा वो आइडिया एक्सप्रेस कर दो ना। वो सबसे बढ़िया है। मनीषा, यस सर। क्या पूछा मैंने कि उस आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करना है? हम लोग बोलेंगे हाँ वो अच्छा है, बहुत कूलेस्ट अच्छा है। बहुत अच्छा, कूलेस्ट मतलब बहुत अच्छा। कूलेस्ट कौन सा डिग्री है भाई? कूलेस्ट सर कौन सा वो, डिग्री? सर सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपने बहुत अच्छा बोला, सुपरलेटिव है हाँ या ना? तो फिर कैसे मैच हुआ वो आइडिया? यही चीज का एक प्रॉब्लम है। अब आप सोचे कि क्या बोलना चाहिए हमें ताकि हम मैच कर सके वो आइडिया। सबसे अच्छा है। सबसे हाँ, बेहतरीन। मस्त बहुत है। अच्छे। हाँ ठीक है। मस्त है। सैम वो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। शी इज द कूलेस्ट, शी इज द, वो तो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। शी इज द कूलेस्ट। ओके। चलिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रही थी मनीषा, जिसकी वजह से आपने कहा हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हम वो नहीं बोल सकते। किस वजह से कह रही थी उसका एग्जाम्पल दे के बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। आप लोग अपने दिमाग में बहुत सारे झाड़ झंखाड़ रखते हैं, उनको हटाने के लिए मैं इतना तेजी से आता हूं एकदम, कि वो कैसे हटा सकूं आपके सोचने के नजरिए से वो झाड़ झंखाड़। आप लोग वहां पर आकर के मत पीछे हट जाना, जब लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मोमेंट है रियलाइज करने का कि जो तुम सोच रहे थे वो गलत था, इसलिए तुम ऐसे जगह पे पहुंचे हो जहां तुम कुछ बोल नहीं पा रहे। तो फिर बताओ क्या सही सोचना चाहिए था। गो ऑन पीपल। Anybody else has a question? Manisha talked about that sentence. Anybody else wants to discuss any other part of the conversation? I'm ready, sitting here. Go on. Otherwise, I'll ask. And when I ask, you guys will all have to pay money. मनी। Yeah, money, money. I love money, Yasmin ma'am. I'm money-minded person, hungry for money. Always need a lot of money. So Why please, don't you? Everyone loves money. everybody loves money. Money है तो honey है, right, guys? पता नहीं सर। Yasmin ma'am, you will never know what it means because you have been a little bit privileged in some ways. A little bit, I will not say because I don't want to jinx anything for you. But, सर, yeah. हु हैज मोर मनी, पीपल देखो, अंडरस्टैंड दे आर मोर इन। देखो, देखो, स्टार्ट कहाँ से किया? Who has more money? सॉरी सर, द पीपल हु हैज मोर मनी। The people who has more money. करेक्शन मोर करो, मनी। फिर से करेक्शन करो, नहीं बोलने Sir, देंगे। those who has more money, Yes, Yasmin ma'am, those that's who right. have more money. That's right, Yasmin ma'am. हाँ जी, मनीषा। दोज हु हैव मोर नहीं मनी। नहीं नहीं नहीं, आप अपना वाला सेंटेंस बोलो, ये तो यास्मीन मैम ने बोला, आप अपना वाला बोलो, सही बोलो। द पीपल हु हैज मोर मनी। अभी नहीं सही है। People लगाए तो हैज कैसे लगाए अपने? यास्मीन मैम, लेट हर थिंक, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। द पीपल हु हैव, the people who have more money, they understand, they are very intelligent. Suppose that I have no money, means I have no money, but I know the things very well. But the people who has more money thinks that I am more superior, I am more intelligent, and people listen to them. I am always shocked that sometime I know that I know these things very well, but because of my my financial condition, people don't means give value as much as I they should give me. I sympathize with you and I understand what you're saying. You're absolutely right. It is true. Sometimes people don't really appreciate qualities which they should appreciate, and sometimes they are influenced by the exterior and the out the appearance, and when you have money, you can make
make things look different, with your money. So yes, I understand what you're saying. I kind of agree with you, but still, let's not get very bitter. Let's not be very negative, and keep trying. Always be your own judge, critic, and you will always keep getting better. Okay. Hmm. Let's see. Anybody has a Yeah, question? Otherwise, I'm gonna ask, and I promise you guys will have to pay if you you don't are have. right, sir. I think money gives a platform to keep our opinion, and people listen whose opinion only who रॉन्ग have सेंटेंस money. अभी 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 यास्मीन मैम ने बोला, फिर आपने भी वही गलती करी। जो मनीषा ने गलती करी वही गलती आपने करी, सीखा ही नहीं उससे। उसने शुरू किया था हु हैज मनी। Okay, पीपल लिसन टू those person. यास्मीन मैम को भी नहीं सुना आपने, नहीं तो आप गौर करके सीख लेती। आप लोग के गौर करके सीखने की क्षमता से मैं शॉक्ड रह जाता हूँ। कितना कम गौर करते हो आप लोग, गौर करके सीखते ही नहीं आप लोग। आप लोग को ना जबरदस्ती सिखाना होता है, नहीं ये वाला लाइन ऐसे है तब ऐसे अच्छा ठीक है, अपने से नहीं गौर कर Actually, पाते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम yes, है यार। actually, in day-to-day life, we speak like this. That's देखो why. सुनो कल्पना, रुक जाओ, वहां पर डिफेंस मत दो। तुम्हें इंग्लिश को सीखना है, बेहतर करना है। हम लोग क्या बोलते हैं ये लाइन नहीं बोलना है हम लोग को। हम लोग अंग्रेजी में स्टैंडर्ड नहीं है क्या? हमारे आसपास जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड है क्या? तो फिर हम क्यों No. उनको उनको बहाना बनाए कि वो क्या बोलते नहीं बोलते हैं? वाई आर वी इन द क्लास? टू इम्प्रूव, टू लर्न, टू गेट बेटर। देन वी हैव टू कीप एन आई ओपन, आवर ईयर्स ओपन टू लर्न, लिसन एंड लर्न। ओके। अभी यास्मीन मैम ने क्या बोला था, खाली वो रिपीट कर देना, जो मनीषा को करेक्ट किया था, बस इतना खाली कर दो आप, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। People who have money, उसको अपने तरीके से कैसे कहा था यास्मीन मैम ने? who has money. यास्मीन मैम ने अपने तरीके से कैसे कहा था? थैंक यू। Yasmin Those who ma'am. have. याद है कल्पना? भूल गई आप? यहाँ पर मेरे अगल बगल बैठे लोग बुदबुदा रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं वो। याद है सर, but I don't know who is Asmin or who is आप खाली लाइन बोलिए, जो एक और लाइन आया था उसका वेरिएशन। people. दोस्त के साथ शुरू हुआ था। Those people who नहीं, आपको have. याद नहीं है? नहीं, यास्मीन मैम ने कहा था those who have money, those who have money are valued more by society. Isn't that true? Nobody can disagree with that. Nobody can contest that idea, that point, that people who have money are valued more by society. Those who have money, those who are richer, are valued more. Okay, absolutely. कल्पना, जब आप किसी को सुनते हैं तो उसके बाद उस पर दिमाग लगाते हैं। आप लोग सीखने के लिए, आप याद रखना, इस क्लास को कभी भी आप अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए मत यूज करना दोस्तों। अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए इसको यूज करना। बहुत वैलिड, बहुत वैल्यूएबल है तुम्हारा टाइम यहाँ पर, बहुत महंगा टाइम है जो टाइम तुम यहाँ स्पेंड करते हो। यास्मीन मैम को मैंने बहुत कन्विंस किया तो वो यहाँ पे हैं। यास्मीन मैम, सही बोल रहा हूँ मैं? आपको मुझे बहुत समझाना पड़ा था कि यास्मीन मैम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप एक समझें इस बात को, ऐसे Sir, हजारों लाखों लोग हैं। 7 p.m. is a precious time for me. And still you are, I'm and still you are here. here. I just want to say, यास्मीन मैम शुरू से मुझे कहती थी कि मुझे बोलने वाला क्लास चाहिए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, यास्मीन मैम आप बोलने वाले क्लास में टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन माने, आप बोल रहे हैं, किसी को बोलते समय इंटरप्ट करके ज्यादा करेक्ट नहीं कर सकते। आज मैं इसलिए कर रहा हूँ मनीषा के साथ, कल्पना के साथ, कि मैं उनको फोर्स करना चाहता हूँ सोचने के लिए। जब वो सुनती है उस समय, मैं हमेशा नहीं करूंगा ऐसा कि आप बोलते रहोगे तो रोक दूं आपको, ठीक है? इट्स नॉट वेरी पोलाइट। ये अच्छी बात थोड़ी है कि कोई कुछ बोल रहा तो आप उसको रोक दो कि नहीं आप करेक्ट करो। लेकिन आप लर्नर्स हो तो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स। सुन के कैसे सीखा जाता है, और जब आप सुन के सीखने पे यकीन कर लोगे, फिर आप चारों तरफ से सुनते रहोगे, सीखते रहोगे, ठीक है? आप नर्वस हो के कोई गलती कर दो, कोई अलग बात है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, बट यू विल नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट, इन व्हेन यू आर काम। ओके। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताना, आप कभी हिंदी में स्पीच देने गए हो और लड़खड़ा करके आवाज गड़बड़ा गई होगी और चले आए हो, तो क्या हिंदी बोलना भूल गए उस समय के बाद से? अरे वो उस मोमेंट में आप नर्वस हो गए, अपने उठ पटांग बातें बोल के चले आए आप, ठीक है? आवाज लड़खड़ा गई, बहुत सारी चीजें होती है। इट डजंट टेक अवे योर एबिलिटी
to speak, ability to speak Hindi, right? So don't doubt your English. Remember that. You got to learn and add more. कल्पना, आप जो बोलना चाह रही हो उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन आपको यास्मीन मैम ने कुछ कोशिश की थी देने की, आप नहीं लिए. Sorry, Sir, sir. may I say something? हाँ जी. If you don't mind. Yes, ma'am. Yesterday, my daughter asked me, "How is your class doing? How is your teacher?" I replied, "If I learn English, then my teacher is good. If I don't, my teacher is not good." Right. That's right. Absolutely correct. Uh, Absolutely. So, so I my agree. my daughter said, "A teacher teaches a class for with 60 students with different skill, ability Different and abilities, varying mixed abilities. Yes. ability and varying abilities, but some are toppers, some are mediocre, and some struggles. So it is not right. It is not teacher's fault. It is if the student don't perform good. It depends on student how how much they time in the class and how much they Jasmine work. ma'am, just a small Yeah, feedback. I totally agree with yeah. everything you said. Whenever you Mm. say how, then you just need to make that ha sound clear, okay? And then your Yeah. pronunciation with that of that word will be perfect. How, not how, okay? So Ha- how, How? how. Yes, this Yeah. is how you are supposed to say this word. And Yes, Kalpana, वो सेंटेंस जो आप yes, sir. बोलना चाह रही थी, आपके पास दिमाग में है वो सेंटेंस? मैं आपकी मदद करूं, कैसे बोलना है वो? I'll try, sir. I think I have forgotten now. नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ. जब भी आप लोग के जहन में जिसका, जिसको, जिससे, ये वाले सेंटेंसेस आएंगे ना, तो आप हंसोगे. हंसोगे दोस्त, क्योंकि ये वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते इंग्लिश. ठीक है, इसके लिए आपको Yeah. ध्यान देना पड़ता है इस तरह से. जिसके पास पैसा है, आपने दोस्त का मतलब जिसका तो नहीं सुना था कभी, तो आप बोल देंगे दोज हु हैव मनी. अब आप बोलेंगे जिसके पास, जिसके पास, तो आप हुज सोच जाएंगे. ठीक है, हुज मतलब ने आपने पढ़ा ना, इसका, किसका, जिसका, आप सुने ना. Yes, ओके, sir. तो आप हुज से नहीं स्टार्ट कर सकेंगे सेंटेंस को. दैट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे आपने हुज वर्ड लाया अपने मुंह पे, आप फंस गए, आप कहीं नहीं जा पाओगे. यू आर हेल्पलेस. दिस इज द रीजन व्हाई दिस वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज सच अ बैड आइडिया. स्टूडेंट्स, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये किसको परेशान करती है? वैसे स्टूडेंट्स को जिनकी इमेजिनेशन उनको धोखा देती है. मैंने आज एक बच्चे को सिखाया फिक्स द बाइक, मतलब बाइक बनाना. तो मैंने जब उसको हिंदी में बोला, बाइक उसने बना दिया अपना, ही फिक्स्ड हिज बाइक. ठीक है, तो वो फट से बोलता है फिक्स योर होमवर्क. ने कहा वाह जी वाह. ठीक है कि मैंने दूसरी हिंदी में बोल सकता था कि उसने बाइक की मरम्मत कर दी, लेकिन जब मैंने कहा कोलोकियली उसने बाइक अपनी बना ली, ठीक है, खुद से, ही फिक्स्ड हिज बाइक ऑन हिज ओन, तो उसने फट से कह दिया ही फिक्स्ड हिज होमवर्क. मैंने कहा भाई तू बता, बाइक बनाना और होमवर्क बनाना तेरे नजर में एक ही चीज है? ठीक है, फिर तो बाल बनाना के लिए भी तू कहेगा फिक्स हेयर, खाना बनाना तो फिक्स मील. हालांकि ये कोलोकियली बोला जाता है कभी कभी, यू नो. हाँ हाँ. लेकिन लेकिन पॉइंट ये था मेरा कि आप ऐसे तभी कर पाते हैं जब आप वर्ड्स पे एहसास नहीं कर रखते कुछ भी. क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना, तो लगता है कि फीलिंग की बात हो रही है. ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हैं कि दाग लग गया है, तो वहां पर आप समझ जाते हैं ये लगना अलग है, चोट लग गई तो ये अलग है. वो फट से महसूस हो जाता है. इसके लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जिन लोगों को टीचर की जरूरत पड़ती है ये बताने के लिए कि ये लगना अलग है, ओके, तो फिर आई कैन डू नथिंग फॉर देम. उनको फिर आपको बहुत समय लगना चाहिए, बहुत लगेगा. ओके रुकैया, आई विल सी यू अराउंड. ओके, tomorrow the tomorrow the class, what do you guys want? Do you guys want the class? Should be off, sir. Should Yes, be sir. on.
Okay, fine. Then I will announce the 5:30 batch to be off as well. It's an online class, no issues. Yeah, okay, guys, it will be off. Otherwise, it will be controversial unnecessarily. Okay. Both. Okay. Tomorrow offline class is also off or not? Every class is off. All the classes are off. It's a government holiday, so classes will be off, and I will have the whole day to myself. But you didn't. I'll inform them. I'll inform them. And you will share the videos on Facebook tomorrow. Don't you? Facebook? That time is. That's why I Whenever said. you are free, I know I have noticed that you have shared a lot of videos on Facebook. I do. I sometimes share things that I like and I want No, to. the video which is related to English, sir. Only you said that type of video. And I also share ideas which are important to me. So I share those ideas. I want people to appreciate those ideas, think about them. Okay, so of course I do. Those people who didn't like post and saw and didn't like it's like nonsense. It is like wasted the whole energy. I don't feel that way. I just share what I like. अच्छा ऐसा समझिए ना, वो जितना ज्यादा जगह रहेगा उतना ज्यादा दिखेगा ना, तो आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू इट, दैट्स ऑल. बाकी लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, दैट्स प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, but I just ensure that that post is available on my wall as well. If I like it, then okay. Coming back to no, I won't consider anything my duty, but I would think it is a good idea to do so. Okay. Yeah, by the way, I was gonna ask you guys a question about this conversation you listen to. Okay, you practice. आप सब लोगों ने कर लिया, ठीक है? तो मुझे जवाब दो, सब लोग जवाब दो. चलो ठीक है. Let me go to this here. And this is a nice app you guys can try, okay, to improve your word order, because English word order is different from Hindi, okay? So try this app. It will definitely help you. What is the name of app, sir? Yeah, the link is right here. You should sometimes visit the group, Kalpana. That is my suggestion to you. Okay, sentence. Sorry, I didn't. Sentence. What is there? Today I'm talking to. Oh, okay. Which line I want to ask? Okay. Okay, everybody. I always find them exciting to watch. I always find them exciting to watch. Okay. बोलिए कि मुझे इंग्लिश सीखने में बड़ा मजा आता है. I enjoy learning English a lot. Okay, तो मैंने वो सेंटेंस दिखा के क्यों पूछा था ये वाला? खाली इतना बता दो, इतना बता दे कोई. क्यों मैंने वो सेंटेंस दिखाया पूछने से पहले मेरे दोस्त? क्यों दिखाया मैंने वो सेंटेंस? जब मुझे यही सुनना था तो मैं देखी नहीं थी. मैं कुछ काम करने 1 मिनट के लिए वो पट्टी गर्म कर रही थी. हमारा यही सब रहेगा. जब ये सब जवाब से इतना चिढ़ लगता है कि मैं क्या ही बताऊं, तो मैं यहाँ लेके आया. आई ऑलवेज फाइंड देम एक्साइटिंग टू वॉच. अरे अगले ही सेकंड मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश सीखने में बड़ा मजा आता है. I always find the learning exciting English. learn. Exciting. I always find English exciting to learn. Yeah, मेरा तो. Yep, good job. I always find learning English exciting, or I always find English exciting to learn. Okay, fine, right, interesting. Now say, piano बजाना सीखना बहुत मजेदार होता है. It is exciting to learn, to play. It is exciting to learn to play the piano. It is exciting to learn to play the piano. Play piano. Okay. Next challenge. आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो मुझे बताओ यहाँ पे. Okay. What is this? I think his music is very special, unique in fact.
इसको कॉपी करके दिखाओ एक और दूसरा सेंटेंस। आई थिंक हिज म्यूजिक इज वेरी स्पेशल, यूनिक इन फैक्ट। इस लाइन को सब लोगों ने लाइन आराम से बोला था, मैंने देखा एकदम ऐसे पढ़े थे। आई थिंक हिज म्यूजिक इज वेरी स्पेशल यूनिक इन फैक्ट, ऐसे करके पढ़े थे। मैं समझ गया कि बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा ये सेंटेंस। चलो बताओ, बस आपने पढ़ दिया। क्यों पढ़ा? क्या था, क्या लिखा हुआ था? सर यूनिक। Sir, I think हिंदी पता है, यूनिक का your हिंदी teaching is पता है, तो very वो मत समझना। special, unique in fact. So, Yasmin ma'am, I will ask you later because I think you might be able to answer this, okay? But let me ask other people here. मेरे हिसाब से वो म्यूजिक अच्छा है, बहुत पसंद है, मतलब अलग है, और ठीक है, पसंद है और अलग है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने हिंदी करी, मैं समझ गया, लेकिन आप वहां नहीं पहुंचे जो मैं चाहता हूँ, और मैं बताता हूँ कैसे होगा। चलो भाई, तानी, मनीषा, अंकित, संजीव, सैम, आरिश, कल्पना, ट्राई। द सेंटेंस इज his music is special, unique in fact. Unmute yourself, Manisha. अब मैं आप लोगों को बताता हूँ गौर से। हाँ बोलो पहले, जल्दी जल्दी I think जल्दी his बोलो, फिर मैं music बताता हूँ। very special. इनफैक्ट का यूज समझ में आएगा इससे। उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है सर, थोड़ा सा सर अलग टाइप है। उसका उनका म्यूजिक हम्म, स्पेशल और अलग होता है। चलिए ठीक है, इतना थैंक यू। अच्छा हिंदी नहीं बोलते हम लोग। थैंक यू, हो गया। कल्पना आप दोबारा मत ट्राई करना, हो गया। आदिश जल्दी बोलो। उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अजीब टाइप का है। थैंक यू, आगे बोलेंगे। म्यूजिक थोड़े हटके है। थैंक यू। सब लोग सही है, लेकिन कोई वो चीज नहीं सीख पाया जो सिखाना चाहता था वो सेंटेंस। आगे बढ़ेंगे, जिशान। सर लाजवाब है सर, ठीक है, अब यूनिक। मत करना, अब ट्राई मत करना, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, मैं बताऊंगा तो समझ। यस मैम। सर आई द मनीषा, सेंटेंस। दोनों बारी बारी से। मनीषा फर्स्ट। सर सबसे अलग है, हो गया, कहाँ लिखा है सबसे अलग? मतलब यूनिक है तो किसी के जैसा यूनिक की नहीं है। खाली हिंदी, यूनिक का हिंदी करने के लिए मैंने ये सेंटेंस पूछा था तुम्हारे हिसाब से? किसी को यूनिक का नहीं, हिंदी नहीं पता था? नहीं सर पूरा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस बोलो, हाँ। मुझे लगता है कि उसका म्यूजिक बहुत स्पेशल है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, मतलब चलो ठीक है, सबसे हो गया। अलग है। ओके 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 ओके, थैंक यू। सैम भारती, आप बहुत अच्छा करी थी मनीषा, वैसे सही जा रही थी आप, मैं आपके पास वापस आ सकता हूँ। सैम क्विकली। इसका जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा है, मतलब इसको सुनकर इंसान कभी बोर नहीं होता, और स्पेशल टाइप है जो इंसान को अच्छा आप करता है। लोग पागल हैं, आप लोग, आपको समझ नहीं आता कि मैं आपसे इंग्लिश सिखाने के बारे में बात करूं कि आपने इंग्लिश में क्या सीखा। आप उसको इतना लंबा लेक्चर देने लगेंगे, कभी आदमी बोर नहीं होता, ये वो करने लगेंगे, तो मैं क्या समझूं? मैं आपसे उन वर्ड्स की हिंदी नहीं समझना चाह रहा, कि नहीं पूछना चाह रहा कि आप उन वर्ड्स की हिंदी समझ रहे कि नहीं। मैं फ्लो लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, कि वो जो इनफैक्ट वर्ड यूज करा है उसका पॉइंट क्या होता है वो समझने की बात कर रहा हूँ। आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। यास्मीन मैम प्लीज ट्राई। I think your teaching is very special, unique in fact. ठीक है, आपने दूसरा सेंटेंस बनाया। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको हिंदी में बोल के बताएं, ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्या बोल रही हैं। मुझे लगता है कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, यूनिक, यूनिक इन फैक्ट, बहुत बेहतरीन। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ। मनीषा आप सही कर रही थी, आपको एक बार और बोलता हूँ बोलने के लिए, प्लीज। सर मुझे ऐसा लगता है कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा, सबसे अलग है एकदम, मतलब कि नो यूनिक। वन इज, उसके जैसा कोई है ही नहीं फिर। अब बहुत सही जा रही है मनीषा, एक्चुअली वो सही बता रही हैं आपको, लेकिन वो समझ नहीं पा रही। जो बोल रही है सही है, लेकिन उसको समझाना मेरा काम है। आई एम द टीचर हियर। लिसन, इनफैक्ट का क्या काम होता है? आपने कोई बात बोल दी, उसके बाद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है, आपको और क्लोज जाना है, जो आपने वर्ड यूज किया ना वो काफी नहीं है, आप और क्लोज जाना चाहते हैं, तो आप अगला वर्ड जो होता है, जो बोलते हैं, इस सेंटेंस की वजह से, इनफैक्ट की वजह से
आप स्पेशल और यूनिक के बीच एक रिश्ता देख सकते हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। तो जरा स्पेशल, हटके। मैं नहीं रुकी ना, स्पेशल और यूनिक के बीच एक रिश्ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हम ऐसे वर्ड्स को इंटेंसिटी में ऊपर लेके जाएं तो नीचे स्पेशल दिखेगा कि ऊपर स्पेशल दिखेगा? नीचे यूनिक दिखेगा कि ऊपर यूनिक दिखेगा? इंटेंसिटी में ऊपर। ऊपर लेके जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है कि वर्ड का जो है ना पावर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कौन सा ऊपर है? यूनिक। यूनिक। ये गौर करने वाली बात है कि स्पेशल बोल के काम चला सकते, चलाने का मन किया, फिर लगा और एक कदम, स्पेशल तो स्पेशल होता है ना, यूनिक है। तो मैं बता रहा हूं, अगर आप इनफैक्ट को ऐसे अप्रिशिएट करोगे, मैंने रजत, क्या नाम है, करण थापर को सुनते समय ऐसे उसके इंटरव्यूज को गौर करा कि मुझे कई शब्दों के बीच के इंटेंसिटी के अंतर का असर पता चला कि कौन वर्ड लेस इंटेंस है, कौन वर्ड ज्यादा इंटेंस है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सरप्राइज्ड, इनफैक्ट अमेज्ड। अब बताइए, He always. सरप्राइज्ड, इनफैक्ट अमेज्ड, मतलब अमेज्ड उससे ऊपर है, इनफैक्ट किससे? सरप्राइज से ऊपर है। पहले सरप्राइज बोला उसने, बोला आई वाज सरप्राइज्ड, एक्चुअली अमेज्ड, मतलब नहीं नहीं सरप्राइज नहीं, और ज्यादा। कौन सा? अमेज्ड। तो जब आप करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा जो बोले ना वो सही है, लेकिन और ज्यादा करेक्ट बोलना चाहते हैं, तो आप इनफैक्ट या एक्चुअली वर्ड यूज करके वो बगल में रख देते हैं वो वर्ड। यानी कि आप स्मॉल करेक्शन किए हैं। आप क्या किए? स्मॉल करेक्शन। स्मॉल करेक्शन करने के लिए इनफैक्ट यूज करते हैं। जैसे वहां उस तरह से भी हो सकता है, जो आपने बोला है वो काफी नहीं, आप उसके दूसरा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इनफैक्ट लगा के, जैसे मैं बोलता हूं आई वॉज अनवेल, आई वॉज अनवेल, इनफैक्ट आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 days। अब क्या समझ में आया आपको कि पहले मैंने जब कहा था अनवेल तो आप उतने क्लोज नहीं पहुंचे थे सिचुएशन के, जब मैंने इनफैक्ट करके जोड़ दिया आपको और करीब पहुंचा दिया कि आप समझ जाओ मेरी सिचुएशन। व्हेन आई सेड आई वाज अनवेल, तो आपको लगा अच्छा ठीक है, अभी आप एहसास नहीं कर पा रहे हो, अब मैं आपको और एहसास कराता हूं, नजदीक ले जाता हूं, सिचुएशन क्या था। इनफैक्ट आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 3 days। देखा आपने? तो इनफैक्ट बोल करके आप और ज्यादा करीब ले जाते हैं मैसेज के इंसान को। तो जब मैंने कहा था आई वाज अनवेल, तो आप खाली इतना ही समझे थे कि मेरी तबीयत खराब थी, राइट? क्या आप नजदीक चले गए थे? सुनिएगा, आई एम गुड एट कंप्यूटर्स, actually, yeah, in fact I have a master's degree in computer application। अब समझ में आया कुछ? पहले मैंने तो कहा था आई एम गुड एट कंप्यूटर्स, ओके, एंड देन मैंने उसके बाद आपको और ज्यादा बताई, और डिटेल दिया, और इंटेंसिटी, मतलब क्लियर किया पिक्चर को। इनफैक्ट आई हैव अ मास्टर्स डिग्री। और सुनिएगा, they are struggling in their relationship, in fact they have already accused each other of unfaithfulness, okay, disloyalty, cheating on each other। मैंने कहा they are struggling in the relationship, they are struggling in the relationship, दोनों के रिलेशनशिप में मामला गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, अभी तक तो आपको कितना ही पता चला, धुंधला पिक्चर है, अब जूम इन करिए और पिक्चर साफ दिखेगा। एक्चुअली या इनफैक्ट they have already accused each other of cheating on each other। तो अब आप समझ गए कि मामला कहां तक पहुंच गया है। अभी थोड़ा देर पहले तक था कि मामला गड़बड़ चल रहा है दोनों के रिश्ते में, अब आप ज्यादा क्लियर पिक्चर देख रहे हैं। तो इनफैक्ट हेल्प करता है आपको और ज्यादा क्लियर पिक्चर बताने के लिए, यानी आपने जो बोला है आप उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा सही बता सकते हैं कोई चीज। ऐसा बातचीत में होता है कि आप कुछ बोल देते हैं, उसके बाद आपको लगता है और बेहतर से क्लियर कर दे, तो इनफैक्ट बोल करके आप ऐसा कर सकते हैं। Dhoni is, Dhoni is a good keeper. Actually, he is the best. In fact, he is the best India has seen. Okay, like that. कुछ समझ में आया दोस्तों? क्या आप ये सब सारा महसूस किए थे उसके पढ़ते समय? तो होता क्या है, कई बार आप अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि मैंने समझ लिया है ना। इनफैक्ट क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है और करीब जाके कोई चीज को और क्लियरली बताने का, और साफ तरीके से बताना, और इंटेंस तरीके से बताना। तो कई बार उस समय बस यही दिमाग में आया था कि जो और जैसा है कोई नहीं है बस। और सुनिएगा, कभी कभी इनफैक्ट का यूज करते हैं आप एक करेक्शन करने के लिए। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ द 21st, इनफैक्ट इट वॉज द
आफ्टरनून. ओके, एक्चुअली इट वाज द आफ्टरनून. ये एक्चुअली यूज करा जाता है ज्यादा करेक्शन करने के लिए. ठीक है, बात समझ में आई? क्या कर लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा फर्क आ जाता है कहीं कहीं पर. ठीक है, ऐसे ज्यादा फर्क नहीं है, इनफैक्ट भी लोग बोल देते हैं, कोई बड़ा डील नहीं है, लेकिन एक्चुअली ज्यादा यूज किया जाता है हल्का सा करेक्शन कर देने के लिए. जैसे मैंने कहा, इट वाज द मॉर्निंग ऑफ द 21st व्हेन शी कॉल्ड मी. एक्चुअली इट वाज द आफ्टरनून. तो क्या किया मैंने, पहले मैंने मॉर्निंग का था, फिर मुझे लगा नहीं नहीं आफ्टरनून था. एक्चुअली इट वाज द आफ्टरनून. तो एक्चुअली से मैंने उसको करेक्शन किया. कई कई बार इनफैक्ट भी लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप करेक्शन की जगह और क्लियर जाना चाहते हैं तो आप इनफैक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इनफैक्ट. और एक्चुअली का क्या काम करना होता है भाई, एक्चुअली सिर्फ आपको हल्का सा करेक्शन कर देना है. कोई बात आपने बोली, he is his sister. No, actually he is not his own sister, he is his cousin. Oh sorry, she is his cousin. She's not his own sister, actually she is his cousin. क्या किया मैंने, देखा आपने, हल्का सा करेक्शन किया है. तो एक्चुअली इज यूज्ड टू मेक अ स्मॉल करेक्शन लाइक दिस. एंड इनफैक्ट आप करेक्शन भी कर सकते हैं, आप थोड़ा और इंटेंसिटी ले जाते हैं, थोड़ा करीब ले जाते हैं. ओके, तो दे आर वेरी वेल टू डू, दे आर वेरी वेल टू डू, काफी अमीर है. इनफैक्ट दे आर द रिचेस्ट इन द टाउन. ओके, बात समझ में आई? पहले मैंने कहा दे आर वेल टू डू, फिर इनफैक्ट से आपको और करीब लेके गए हम कि इनफैक्ट दे आर द रिचेस्ट इन द टाउन. अपने शहर के सबसे अमीर लोग हैं और दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट इन द टाउन. पहले मैंने कहा था दे आर वेल टू डू, तो वेल टू डू से तो हो गया कि रईस हैं भाई, ठीक है अमीर हैं. लेकिन फिर मैंने और पिक्चर क्लियर कर दिया आपके लिए, जूम इन करके HD क्वालिटी कर दिया. क्या, इनफैक्ट दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द टाउन. तो ये था इनफैक्ट का. आप लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप बस परवाह नहीं करते. ठीक है, जब आप परवाह करने लगेंगे ना कि क्या पढ़ रहे था रुक करके, तो यू गाइस विल बी एटलीस्ट आई विल से क्यूरियस टू आस्क, इस तरह इसका फ्लो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे, तो सोचेंगे ज्यादा एंड यू विल लर्न बेटर. और खासकर और ज्यादा सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक रीजन है कि हम लोग कम समय में उम्मीद करते हैं. अगर ज्यादा समय देंगे ना सुनने को तो ज्यादा फर्क पड़ेगा. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप खाली बात करके नहीं इस चीज को हासिल कर सकते, आपको पहले सुनना पड़ता है. सुनते सुनते, मैं अपनी अगर बात करूं तो कई चीजों का एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आता है. सुनने से फर्क पड़ता है. जितने सारे लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं चाहे इंडियंस हैं, तो जो हिंदी में समझ हमारी बनी है वो किसी से पूछ के बनी है, सुनने से बनी है, सोच के बताना. सुनने से बनी है. अगर आप इंग्लिश ज्यादा सुनोगे तो आपको इंग्लिश में समझ बनेगी. हाँ, समटाइम्स यू विल नीड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, नो डाउट, एवरीबॉडी डज. ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, but it always helps to be immersed in the language that we are trying to learn. Yes, Arish, that's right. Yeah, punctuation Sir, पे भी ध्यान. sir, can I say something? Yes, sure. Sir, I just said his English is good. In fact, his English is very good. It हाँ, is a right. exactly. इसी तरह का. Okay, yeah. Yes, sir. Yeah. In fact, he is one of the best in the class. ठीक है, ऐसे करके. Got it? Okay, time to practice a little bit. Homework for the day after tomorrow, maybe. Practice what's okay. Practice what's Berlin like. सवाल का क्या मतलब हुआ? What's Berlin like? Tell me about Berlin. I don't know anything. That is exactly what it means, everybody. I don't know about it. Tell me. What's Berlin like? Matt's favorite German city is Berlin. Matt Hennick, this guy, his favorite city is Berlin. Complete the questions about it with is or are and the correct words from the box. Everybody do it now.
Someone please put the page in the group. Flow of the language is so important to notice. Flow of the language. How one sentence links to another sentence. That's something that most people ignore. They only focus on one sentence, not about the flow of the language. That's the reason why they find it difficult to speak. They don't notice the flow. It's a really, what's Berlin like? It's a really exciting city. There's so much going on all the time. There's so much going on. There's so much happening all the time. There's so much going on. There's so much happening all the time. What like there? It's okay. It gets hot in summer and very cold in winters. Come on. What's the weather like, sir? What's the What's the weather weather like? like there? What's the weather like there? It's okay. It gets hot in summer and very cold in winter. And we do get quite a lot of rain. But people don't go there for the sunshine. Number 3. I will come and explain. Don't worry. Again, the What sentences. the people like. One more what the time, people like? everybody. What are What the people like, sir? Sanjeev what are the Babu. people like? Sanjeev Babu. What's going on, Sanjeev Babu? What a blunder, Sanjeev Babu. Other people, tell me. Number What 3. are the people like, sir? What are the people like? He's dropping the be verb. If you say what people like, Sanjeev Babu, then what's the verb? Yeah, and No work. Come on, Sanjeev. What a blunder. How do you do it? You're not able to see that there is no verb when you're saying this sentence, and you didn't say it once, you said it again and again. yeah, What the people like? Berliners are great. Very Berliners. interesting. Berliners. They are a very interesting mix. They're a very interesting mix. It's a big group of people. They're a very interesting group of people. It's a very cosmopolitan city, cosmopolitan, and it attracts unusual people. What do I say? We all- Cosmopolitan means, sir? Sorry, Arish? Cosmopolitan. Politan.
Cosmopolitan. Yeah. What it Cosmopolitan. means? People from all over the world live there. It's a cosmopolitan. Okay. Cosmopolitan. Cosmopolitan, not politician. Cosmopolitan. 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 Next. Cosmopolitan. And what are the And buildings? what are the buildings? The buildings like What are the Some of them buildings? are famous and historical, but there are some fantastic modern ones too. Okay, number 5. What? What are What the are the restaurants like? restaurant like? Brilliant. You can find food from every country in the world and some great traditional German food too. Last. What is the nightlife? What is the nightlife like? What is the nightlife like? It's fantastic. There are lots of really good bars and clubs and some wonderful theaters and concert halls. It's the best thing about Berlin. Okay, nightlife is the best thing about Berlin. So if you want to live in Berlin, by the way, guys, okay, this is what you need to know. 7.2, I will share the audio file and we will wrap up for today. We will carry on tomorrow, the day after tomorrow, people. so send of page also. Sure, I will. Not tomorrow, sir. Day after tomorrow. Exactly. I'm sharing the whole page. And I'm sharing the next audio file as well. 8.3. The homework for 7.3. tomorrow. Matt's favorite city. Fine, everyone. Let's meet tomorrow. Well, yes, Arish, I haven't shared the video yet. I remember I'm going to. Okay, don't worry. I will not skip it. Be assured, okay? The video for the Romans, the changes that the Romans brought to the British lifestyle, you know? So, guys, let's end the class today. We will continue the day after tomorrow. Tomorrow, maybe we will have just one class at night, the grammar class, maybe at 8:30 because all other classes will be off. So we'll study. I'll let you know, okay? I'll inform everybody in the group. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, sir.